Hello everyone, welcome to Life Simplified, another live session. I hope you can see me and hear me clearly. So let's begin with today's topic, and today we are going to talk about something called as layers of onion. Okay, so before we begin, let us start with a short invocation, okay, a short prayer to begin with. Okay, so just be aware, just tune inside, inhale deeply, exhale, inhale again and exhale. To the Supreme God, to Master Chokoksui, to all the great ones. Thank you for your blessings. Thank you for your presence. Thank you for bringing us all together. Thank you in full faith. So be it. Just inhale deeply and exhale. Feel the energy pouring down on you. Gently open your eyes. So welcome once again, and today we are going to talk about a different topic, and we call it the layers of onion. Okay, so what is this? What is the meaning of this layers of onion? So have you not seen that बहुत बार ऐसे होता है कि suppose हमारे अंदर कोई weakness है, suppose हमारे अंदर कोई negative quality है या कोई negative weakness है, और जैसे for example से anger. Now, suppose आपके अंदर anger है and you got angry, but after getting angry, you tried to work on it, and then you thought, okay, now my anger has gone. But ऐसा होता है कि 8 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से वो anger आ जाता है. फिर हम लोग सोचते हैं, अरे मेरा तो anger गया ही नहीं. Why is my anger coming back? Why is this anger coming back? And then we often get upset, and we feel कि नहीं, मेरा तो ये weakness जा ही नहीं रहा है. So how many of you relate to this? How many of you feel that this happens? It could be anything. It could be anger, it could be fear, it could be sadness, it could be any negative emotion जो बहुत बार ऐसे लगता है कि मैंने ये इमोशन हटाया है और इस इमोशन से मैं बाहर निकल गई हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद लगता है कि फिर से आ गया. How many of you experience this? Just give me a thumbs up if you have experienced this, or if you feel, yes, this happens, or you relate to it. All right. So now we are going to talk more about this, that what does this really mean. Now Grandmaster Chokoksui very beautifully, मास्टर का कोट है जो मैंने इसमें डाला भी था. मास्टर बहुत beautifully बोलते हैं कि हमारे अंदर की जो weaknesses होती है, we all have weaknesses. So the weaknesses which we have within us, they are like layers of onion. Onion का layer कैसा होता है? आप देखेंगे एक जो onion होता है उसका आप एक पैच निकालते हैं तो दूसरा पैच सामने आ जाता है, फिर हम लोग दूसरा पैच निकालते हैं, फिर तीसरा पैच निकालते हैं. You keep on removing the layers, and then finally you reach to the middle part of the onion. Similarly, हमारे अंदर की जो weaknesses होती हैं उसके भी layers होते हैं. तो हम लोग weakness जब सामने बाहर आती है तो उसका एक layer निकालते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, और ठीक करने के बाद हम लोग को अच्छा भी लगता है. तो उधर आपने क्या किया, आपने अनियन का एक लेयर निकाला, लेकिन कुछ दिन बाद वो वीकनेस फिर से सामने आ गई. तो अब क्या हुआ है, द सेकेंड लेयर हैज कम आउट, और द सेकेंड लेयर नीड्स टू बी रिमूव्ड. नाउ द क्वेश्चन इज कि सच में हमारा ये वीकनेस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे. So to my limited understanding, what I feel is, suppose हमारे अंदर weakness है, let's taking an example of anger. Suppose you get angry. Now आप first time जब angry हुए, you have to rate yourself कि on a scale of 10, how much was your anger? And suppose on the scale of 10, your anger was on 10, वो एकदम 10 पर था. Now next time जब anger आया, आप अपने आप को बोलेंगे, अरे मुझे तो बहुत फिर से गुस्सा आ गया. Now you need to cool down and ask yourself कि last time मेरा anger जो 10 के scale पर 10 था, इस बार वो कितना है. And अगर इस बार the answer is that it has come down to 8, that means one layer has been removed and
it has shrunk. Okay, ना हो सकता है उसके बाद आपको फिर से एंगर आए, तो फिर से अगर एंगर आएगा then again you have to ask yourself on a scale of 10 how much was my anger. So आपको लगेगा कि नहीं लास्ट टाइम 10 था, उसके बाद 8 था, इस बार it is come down to 6, and then maybe it then comes down to 4, then it comes down to 2, then it comes down to 0. And that is where you feel okay, finally the weakness is completely disintegrated, या वो weakness पूरी तरह से ठीक हो गई है, या आप उस weakness से पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं. So that you will only experience, and that is what Grandmaster Chokoksui tries to explain us, कि ऐसा नहीं होता है कि एक weakness है हमारे अंदर में और वो रातों रात पूरी ठीक हो गई. It doesn't happen like that. It only goes layer by layer by layer by layer. So one way on the spiritual path, अगर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो हम लोग को उसकी ट्रैकिंग करनी चाहिए. You know, we need to track it. We need to track it कि are my layer shrinking or not. अगर 10 का स्केल 8 पर आ रहा है, यानी कि एक अनियन का लेयर निकल गया, फिर वो 6 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, and then finally it is getting disintegrated. That means you are on the right track. But many times it happens that you say, for example, again anger, if your anger on a scale of 10 was 10, and second time when you got angry it was not 10, it actually went up to 12, then you are not on the right track. So what I'm trying to say, what we are trying to understand is it takes time for a weakness to go away. We need to track ourselves. And when we track ourselves, we need to check that it needs to be reduced layer by layer. It may not happen overnight, but there should be a decrease in the intensity of how it was last time. And if it is enhanced from last time to this time, that means we are not on the right track. लेकिन अगर हम एक अनियन की तरह है कि ठीक है इस बार एक लेयर कम हुआ, फिर एक लेयर कम हुआ, फिर एक लेयर कम हुआ, then we are doing a good job and we are on track. Now let me just share a tip with all of you कि इसको हम लोग अपने practical level पे कैसे practice कर सकते हैं. To understand a tip, now just for a moment let's do this practically now. एक मिनट के लिए for a moment think about any one weakness. कोई भी एक weakness के बारे में सोचिए, या कोई भी एक negative habit. Let's not even talk about weakness. Let's just talk about a negative habit. Think about any one negative habit जो आपको पता है आपके अंदर है, लेकिन आप उस habit को अपने अंदर से निकालना चाहते हैं. You don't like that habit and you want to remove it from your system. What is that negative habit? Just think about it. Or you can also put it in the chat box so that I can have some examples and maybe we can take up an example. It could be anything, like it could be a negative habit of maybe getting up late in the morning, or maybe a negative habit of getting irritable at certain things. कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक negative habit, simple negative habit, and we will share tips कि कैसे हम लोग एक अनियन की तरह उसको layer by layer कम कर सकते हैं. So we'll just have a practical discussion on that. Yes. Okay, so say for example, if you have a negative habit, like somebody has put in fear. तो सपोज आपको कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, तो आपने सोचा कि ओके मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मुझे अपने अंदर का डर कम करना है, एंड यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर एट दैट. ओके, लाइक किसी ने लिखा है कि शेड्यूलिंग, आप शेड्यूलिंग करने में आपको तकलीफ होती है, तो आप शेड्यूल बना नहीं पाते हैं या अपने कमिटमेंट को रख नहीं पाते हैं और आपको वो हैबिट अपनी ठीक करनी है. दैट कुड बी अनदर एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिसाइजिंग, या समबडी इज पुट इन द चैट बॉक्स क्रिटिसाइजिंग. सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और बाद में हम लोग रिग्रेट करते हैं कि नो आई शुडंट हैव क्रिटिसाइज्ड सो मच, इट वाज नॉट नीडेड. Okay, so let's take any one example. So let's take an example of criticism. Okay, now suppose whenever a negative event happens, and when that negative event happens, you criticize, okay, or you gossip about it, or you criticize about it, or you think and talk negative about it. Often it happens कि उसके बाद हम लोग को बहुत गिल्टी फीलिंग होती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. So this is a pattern. Okay, so if you like, you can note down these points. So the first point is you committed a negative act. You know, आपने एक negative action की. That is point 1. Step 1. Now step 2 is the realization. At least you're realizing कि नहीं मैंने जो ये गलत की, मैंने जो ये किया ये गलत है.
मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था. So step 1 is you performed the negative act. Step 2 is you realized. So this is called as self-realization. You internally self-realized कि no, I should not have done this. So suppose आपने कुछ criticism किया, or you got lazy, or you got short-tempered, or you told lot of negative words to yourself. आपने ये किया, लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप पर आपको ये रियलाइजेशन भी हुई कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो दैट्स स्टेप 2. नाउ यू गो टू स्टेप 3. नाउ स्टेप 3 पर आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि ओके, मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन ऑन अ स्केल ऑफ 10 हाउ वुड आई रेट माई सेल्फ? मैं अपने आप को कैसे रेट कर सकती हूँ? सो यू विल एक्चुअली रेट योर सेल्फ, एंड दैट इज स्टेप 3. सो इन स्टेप 3 व्हाट विल यू डू? You will rate yourself. Now, for example, if you are talking about criticism, then in step 3 you will rate yourself on a scale of 10. How much did I criticize? Suppose आपने circle किया on 8 कि my criticism level was on the scale of 10. You have to self analyze. कोई आपका ये काम देखने नहीं वाला. It is just for your self introspection. Now, suppose on a scale of 10 you circled 8. So you remember this. ये आपका जो अनियन है, ऊपर का लेयर कितना है? It is on a scale of 10, it is on 8. Then of course you internally you can ask for forgiveness from the soul जिसे आपने criticize किया, and then you tell yourself I shall not do this again. That is step 4. So in step 4 you just tell yourself कि okay, next time if this happens, God give me the inner strength to not criticize, and you promise to yourself that next time I shall not do it, or I will reduce it. Because not do it may be difficult. So maybe you tell yourself, okay, I will reduce it. At least I will reduce it to another layer. क्योंकि कितना बार अगर हम लोग ये टारगेट डालते हैं कि हम उसको पूरा खत्म कर देंगे, it may be an unrealistic target. It may not be a realistic one. Alright? So, are you clear with the 3 steps? So step 1, you first perform the negative act. You write that down. Second, you realized it. On the third step, you rate it. Rate it on a scale of 10, that how much was the intensity of that negative quality or that negative act which you did. Now comes step 4, where you will tell yourself or analyze yourself that next time how will be my thoughts, my words, my actions, or next time मैं इसे कैसे handle करूँगी. So this is a self talk you need to do. So that's step 4. Now often it happens कि हम लोग जब भी अपने आप को बोलते हैं कि हम ये next time नहीं करने वाले हैं, or I'm going to control this, have you not seen that you get tested? And that is where step 5 comes in. Your another test. You will be tested, where a similar type of situation will be created, and then the universe or the great ones will see how is your response. Now suppose 5th step par the test came again. Why am I using the word test? Because these are spiritual tests. These are the spiritual tests that we go through where our character is tested. So step 5, the test comes again. Again, when the test comes, what will you do at step 6? Suppose फिर से वो situation हुई, फिर से आप irritate हुए, फिर से आप criticize किए. So on step 6, you will re-evaluate yourself that this time, when the test came again, how much was my criticism in comparison to last time? अगर last time 10 के स्केल पर आप 8 पर थे, इस बार you check कि 10 के स्केल पर हम कहाँ हैं. And if you have come on 6 also, हो सकता है आपने इस बार भी criticize किया, कोई बात नहीं. But अगर आप 8 से 6 पर आ गए हैं, from 8 if you have come down to 6, it's almost 20 to 30% reduced. You appreciate yourself. Tell yourself, good job done. My one layer is peeled off. मेरा एक लेयर अनियन का निकल गया है. पिछला बार जितनी इंटेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में इस बार मेरी इंटेंसिटी थोड़ी श्रिंक हो गई है. And that is where you will appreciate yourself, that it's okay, I'm still criticizing, but I have come down from 8 to 6, and next time I'll make it even lesser. And maybe you set a small target for yourself to come down to 4. Do you get this? तो जब आप 4 पर आएंगे, फिर आप 2 पर जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर फाइनली आप 0 पे जाएंगे.
And that is how we can overcome weaknesses. Now, iska ulta, so this is basically step 5, the test comes again. Step 6, you will reevaluate. And step 7, if you have seen a reduction, you should appreciate yourself. Don't practice low self-esteem. Oh, फिर से हम criticize कर दिए. No, you appreciate yourself that wow, I have come down by X percentage. Good job done. So you appreciate yourself. So these are the 7 steps of how you can work with the layers of onion. Why we use this analogy? क्योंकि कभी कभी कुछ एक analogy देने से हम लोग concept को ठीक से समझ पाते हैं. So हम लोग को यही concept, कोई भी एक habit. Now often what happens is, अगर हम लोग कोई भी weakness को या एक negative habit को एक layer की तरह या एक onion की तरह अगर हम लोग नहीं देखते हैं, तो इसका flip side क्या है? Flip side इसका ये है, the crazy flip side that is, it leads to lot of low self-esteem. Why does it lead to low self-esteem? Because हम लोग ये expect करते हैं कि रातों रात मेरी weakness ठीक हो जाए या मेरा ये problem ठीक हो जाए, and next time जब हम फिर से criticize करते हैं, we stab ourselves. फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मेरे से तो ये हैबिट ठीक ही नहीं हो रही है, कल ही मैंने सोचा था कि हम criticize नहीं करेंगे, आज मैंने फिर criticize कर दिया, and then you get into more criticism. Because you're not appreciating or not looking or not seeing that you are getting better. Now इसमें क्या हो रहा है कि if you criticize yourself for that negative habit, onion उल्टा होने लगता है. उल्टा कैसे होने लगता है कि वो जो वीकनेस है, क्योंकि आप इतने ज्यादा उसको लेकर के हाइपर हो रहे हैं और इतना ज्यादा अपने आप को कोस रहे हैं, तो अनियन का लेयर कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट एक और चढ़ जा रहा है. इनफैक्ट विद दिस एटीट्यूड आप ये देखेंगे कि आपके अंदर की जो वीकनेस है उल्टे का वो बढ़ती जाएगी. हैव यू नॉट सीन दैट? गिव मी अ यस और अ थम्स अप और अ पॉप अप मैसेज इफ यू हैव सीन दैट. एटलीस्ट आई हैव सीन दैट विद माई सेल्फ ऑल्सो, कि जब कोई वीकनेस है एंड आई गेट वेरी हाइपर अबाउट इट कि नहीं ये वीकनेस को मुझे हटाना है, एंड आई डोंट अप्रिशिएट द लिटिल इम्प्रूवमेंट्स जो मुझे अपने आप में दिख रहे हैं, आई हैव ऑफन सीन कि वो वीकनेस और ज्यादा बड़ी हो जाती है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनदर लेयर गेटिंग, वो 8 से वीकनेस चली जाती है 10 पर, 10 से चली जाती है 12 पर. इट गोज इन अ रिवर्स डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को और क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये इतना डिफिकल्ट है. So it's actually the onion going in a reverse direction, another layer coming up, then another layer coming up, and then another layer coming up. So when you're seeing 10%, 20%, 30% reductions, we really need to appreciate ourselves. और आप देखेंगे कि 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, हो सकता है साल भर में, आपके अंदर का वो वीकनेस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. And that is how we finally gain mastery over a particular habit. Otherwise, getting hyper about it or just looking at the weakness and getting upset about it over and over again will only increase the layers. So question for all of you, do you want to reduce the layers or do you want to enhance the layers? So reducing layers means appreciating yourself for the little changes or the little improvements that you see within you. And criticizing yourself too much क्योंकि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, it's actually adding on a layer. So that is what we wanted to talk about. So friends, let's remove our weaknesses layer by layer, layer by layer, and let's enjoy the process. और जब एक अनियन पूरी तरह से पील हो जाता है, तो फिर आप दूसरा उठाइए, and the same steps goes on. The same 7 steps which I discussed. Keep removing, keep removing, keep removing, and it is a constant process. Why is it a constant process? Because nobody is perfect. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और अपने आप को ठीक करने का जो हमारा एफर्ट है ये तो चलता जाएगा, because we will always find something in ourselves to be worked upon, to be improved upon. So take it objectively, take it lightly, and appreciate the little improvements that we see in ourselves on a day-to-day basis. All right. So thank you very much for joining in, and I shall see you again on Sunday at 3 p.m. with another interesting topic to go. So stay tuned, and thank you very much for all the love that you're showering us on Life Simplified. We recently touched 15,000 members, so we really appreciate all the support that we have been getting consistently on this group. Thank you very much, and let's stay tuned and let's continue to add values in each other's lives to make our life simplified. Thank you very much. Atma, namaste.